Today, on the feast of Our Lady of Sorrows, I wish you all a very happy feast. May Mary, Mother of Charity, at the foot of the cross, help us to understand love hidden in the Paschal mystery, so that we may be available to serve the poorest and the marginalized. Saint Magdalene, our foundress, regards Calvary as the birthplace of the Daughters of Charity. It is here that Our Lady of Sorrows received the title Mother of Charity at this precise moment of her life under the cross. It is here that Our Lady of Sorrows has been constituted Mother of Charity because it was at this very moment that she had accepted all of us, sinners though we are, in her maternal heart. Saint Magdalene says, "Before beginning the holy rules, I must let you know who it was that obtained the carrying out of this work from the Lord, and who has directed it up to now. It is Our Lady of Sorrows, known as Mother of Charity under the cross, when at the words of her dying divine Son, she accepted all of us in her maternal heart. I beg all of you to regard her always as your one and only mother, as a duty of justice, truth, gratitude, and a humble, devout affection. This devotion invites all of us to be true daughters of Our Lady of Sorrows and to console her with the sanctity of our own life. So, let us live a life of holiness by sowing the seeds of union, fraternal affection, forgiveness in our communities and in the apostolate. We avoid everything that injures communion and unity. Let us avoid pessimism, sadness that causes discouragement and takes away courage and joy in living our life of consecration intensely. We are called to shield and protect her afflicted heart from being pierced by new wounds. So, let us endeavor to prevent sin through our apostolic charitable activities. Let us all walk in the footsteps of our Mother Mary. Once again, I wish you all a very happy feast. माता मरियम का प्रथम दुख, सिमियोन की भविष्यवाणी। प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण के समय सिमियोन ने भविष्यवाणी करते हुए माता मरियम से यह कहा कि इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। वास्तव में बालक यीशु के बारे में यह एक अद्भुत घोषणा थी जिसे सुनकर माता मरियम विस्मित थी। फिर भी उन्होंने अपनी इस व्यथा को अपने हृदय में संजो कर रखा। हम प्रार्थना करें जिससे कि हम प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकें। The second sorrow of Mother Mary was the flight into Egypt. It is difficult to imagine the tremendous anxiety Mary and Joseph underwent during their flight into Egypt. Ignoring the physical fatigue, Mary and Joseph had to move away from a known to unknown place. The sorrow that a young inexperienced mother felt in her heart at this time was
beyond one's comprehension. What caused this sorrow? It was the envy, jealousy, greed for power, and the fear of losing power and position. Let us pray that we may be able to withstand courageously all the moments of anxiety in our lives. The third sorrow of Mother Mary was that Jesus was lost in the temple. Terror gripped her tender heart when Mary realized at the end of 3 days' long journey that her beloved son was missing. This was one of the bitterest sorrows for Mother Mary because in her other trials and grief, she at least had Jesus with her. But now she was separated from him and knew not where he was and whether she was at fault because he was missing. Let us pray for the youth of today that Mother Mary may gather them under her mantle and protect them from the evil powers. माता मरियम का चौथा दुख। कलवारी के मार्ग पर पुत्र और माता की भेंट। मानव जाति के मुक्ति के लिए क्रूस वहन करते हुए जब प्रभु यीशु कलवारी के मार्ग पर जा रहे थे, उनकी मुलाकात माता मरियम से होती है। कितनी दर्द भरी भेंट हो रही होगी। माता मरियम हमारी प्रेरणा स्रोत है, जो जीवन के पथ पर हमारा हाथ थामे रहती है। हम प्रार्थना करें कि हम दुख संकट में साहस, विश्वास और धीरज के साथ आगे बढ़ सकें। The fifth sorrow of Mother Mary was witnessing the crucifixion of her son Jesus. At the crucifixion, the sword will plunge still deeper into the heart of Mary as she sees her son being shamefully stripping of his garments, rudely thrown upon the cross, and then hearing the sickening strokes of the hammer driving the nails into his hands and feet. Mary stood at the foot of the cross, lovingly embracing the will of God. Let us pray for those agonizing mothers who have lost their beloved children untimely due to accidents, natural calamities, and life-threatening diseases like coronavirus infection. The sixth sorrow of Mother Mary was Jesus
taken down from the cross. It is difficult to imagine how a mother would feel if the dead body of her son is kept on her lap. As each nail and each thorn was pulled from his dead body, it was a new blow to the heart of his mother. As she held him once again in her arms, how she must have hugged him to her heart. How she must have tried to kiss him back to life. Let us pray for women all over the world that they may become beacons of hope and epitome of courage for her listless children. माता मरियम का 7वां दुख, यीशु का शरीर कब्र में दफनाया जाता है। यीशु की मृत्यु के बाद अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से यीशु का शव मांगा और उसे छालटी के कफन में लपेटकर ऐसी कब्र में दफना दिया जो चट्टान पर खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। माता मरियम अकथनीय दुख और पीड़ा के साथ अपने पुत्र की अंतिम यात्रा में साथ देती है। हम प्रार्थना करें कि माता मरियम की तरह हम भी दुख और पीड़ा में छिपी ईश्वर की रहस्यमय योजनाओं को समझ सके। माता मरियम हमारी युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। पवित्रता, संवेदनशीलता, विनम्रता, सेवा भाव, इस सारे लक्षणों को वो आज हमारे युवाओं के समक्ष रखती है। माता मरियम ने अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने जीवन की सारी समस्याओं को पार किया और आज वो हमारे युवाओं को दृढ़ विश्वासी बनने की प्रेरणा देती हैं। माता मरियम परिवारों की रानी हैं। उन्हें सम्मानित करने के लिए हम रोजरी माला विनती करते हैं। जीवन में जब दुख संकट की घड़ी आती है तो परिवारों की रानी माँ मरियम ही हमें संभालती हैं। प्रत्येक ख्रिस्तीय परिवार को माँ मरियम दुख संकट से बचाकर सच्ची राह पर चलने का मार्गदर्शन व रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। आधुनिक समाज में घरों में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े आदि द्वारा परिवारों के बिखर जाने पर माँ मरियम ही हमें जोड़ सकती हैं। परिवार में मेल मिलाप व सुख शांति प्रदान करती हैं। संतप्त माँ मरियम हमारे मसीही परिवारों की आदर्श हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा सच्चा जीवन निहित है। It's my great joy and pride to speak about Mother Mary and the role she plays in my life as a religious. Hailing from a God-fearing family,
Praying the rosary with the litany every day was a must. And as I grew up, I felt so much attracted to join the Canossian Daughters of Charity, whose model is Mary, Mother of Sorrows. Our mother foundress, Saint Magdalene of Canossa, says, Mother Mary is the one and the only mother. Gazing at her at the foot of the cross, I draw inspiration and strength to live my religious life to the full. Living in communities with the members of different temperaments, family background, and culture, it is not easy to live in communion and harmony with each other. Whenever there is misunderstanding, criticism, rejection, and conflicts of all sorts, and I feel sad and rejected, Mother Mary would whisper in my ears, let it be. Whenever the decisions taken in the community are not in keeping with my ideas, and I feel to revolt, Mother Mary would whisper again, Savia, let it be. These three little words of Mother Mary are so powerful and energizing that it makes me feel dead to everything around, especially the unpleasant things, and fills my heart with love and compassion, forgiveness and humility. माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है रखना ओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ आए हैं पास
माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना ओ माँ। माँ